हेलो, गुड इवनिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हिंदी संस्कृति में शब्द हैं चेतना, या अक्सर करके हम लोग उसे प्राण करके भी बुलाते हैं। क्या ये शब्द सेम हैं अर्थ और अभिप्राय में अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्शियसनेस से? किस हद तक दोनों सेम हैं, सिमिलर हैं, और दोनों में यदि डिफरेंसेस हैं तो वो क्या हैं, वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बेसिकली हमारा इंटेंशन है एक बार फिर से ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी को थोड़ा सा कंपैरिजन नोट्स क्रिएट करना, ताकि हम दोनों के बीच के अंतर और समानताओं को समझ के उनको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ सकें। जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, अक्सर करके कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन अपने आप में हमारी खुद की समझ को व्यापक बनाता है, हमारी एप्रिसिएशन इम्प्रूव करता है दोनों फिलॉसफी की। तो इसका पर्पस कंपैरिजन का एप्रिसिएशन को बढ़ाना है दोनों फिलॉसफीज के प्रति। ईस्ट की फिलॉसफी जो हमारे देश की है, और वेस्टर्न फिलॉसफी जो कि पश्चिमी जगत में प्रयोग करी जाती है। तो आरंभ करते हैं। फिलोसोफर्स को आरंभ के युग में जो एक सवाल अक्सर करके प्रेरित करता रहा है अपने आप में मंत्रमुग्ध होकर कुछ भी सोचते रहने के लिए, वो उनमें से एक सबसे प्रथम सवाल रहा है, जीवन क्या है। ये एक सवाल समस्त इंसानों को दुनिया भर में हमेशा प्रेरित करता रहा है फिलॉसफी के प्रति। तो ईस्टर्न साइड में भारत और चीन जैसे देशों में इसके प्रति जो विचार निकला फिलॉसफी का आरंभ के दिशा में, वो मोस्टली तो आज समझ सकते हैं वो थियोसॉफी के फील्ड से ही था।
स्पिरिचुअलिटी और थियोसॉफी ही आरंभिक फिलॉसफीज रही हैं। तो ईस्टर्न साइड में जीवन के प्रति जो भी थोड़ी बहुत समझ विकसित हो पाई, उसके अनुसार समस्त प्राणियों में एवरी थिंग हैड गॉट अ life, kind of a soul in it, which they refer to by the term prana. और प्राण एक प्रकार से एक आत्मा होती थी, और जिसके अंदर ये आत्मा होती थी, फिर वो उसके अंदर जीवन माना जाता था। तो ये जो आत्मा थी, ये ऐसा नहीं कि आज की मॉडर्न सब्जेक्ट जो आ चुके हैं फिलॉसफी के आगे बढ़ते बढ़ते, बायोलॉजी उसके सेम थे जो कि पुराने समय में समझे जाते थे। जीवन जो था ये बहुत इंसान पशु पक्षियों में भी होता था, और ये पर्वतों और पेड़ों में और यहाँ तक कि पत्थरों में भी होता था। तो सभी में, इन सब में भी जीवन हो सकता था, और यानी कि इनमें प्राण हो सकता था। जब यदि पत्थरों में या पेड़ों में या पत्थरों में ये जीवन होता था, तो उनको जो हम लोग हमारे पुराने समय में जो योग हैं, उन्होंने यक्ष करके बुलाया है। जैसे कि महाभारत में भी एक बार एक यक्ष का जिक्र आता है। यक्ष यानी कि ऐसे वृक्ष या पर्वत या फिर पत्थर जिनके अंदर आत्मा है। तो ऐसा नहीं कि सभी पेड़ों में पत्थरों में आत्मा होती, लेकिन कुछ एक में कहीं कहीं पाई जा सकती है, ऐसा एक विश्वास था। और यदि वो आत्मा होती थी तो वो भी देवता के समान मानी जाती थी, और तब उसको एक यक्ष माना जाता था कि इस वृक्ष में इसमें एक यक्ष रहता है। और ऐसा ही कुछ वेस्टर्न फिलॉसफी में भी था, जहाँ पे कि सोल के बारे में, तो एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों में था ही विचार कि सोल होती है, और सोल ही लाइफ का मेन कॉज है, कि जीवन का जिसमें है उसका कारण ये है कि उसमें एक आत्मा बसी हुई है। अब ये तो ठीक है, सोल तक तो बात सही है। इसके बाद आगे वेस्टर्न फिलॉसफी ने थोड़ा सा एक टर्न ले लिया, और उनके अनुसार ये सोल जो थी हर एक चीज़ में नहीं थी। तो ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का यहाँ से एक कॉन्सेप्ट वेस्टर्न फिलॉसफी में शुरू हुआ, कि सभी चीज़ लिविंग नहीं हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग भी होती हैं। तो यहाँ से एक डिफरेंस आ गया कि जो लिविंग थिंग हैं उनका एक अलग क्लासिफिकेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया वेस्टर्न फिलॉसफी में, जिसमें कि लिविंग थिंग में सिर्फ एनिमल्स आते थे, बर्ड्स आती थीं, फिशेस आती थीं, और ह्यूमन बींग्स आते थे। और नॉन लिविंग थिंग में ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स, क्लाउड्स, स्काई, अर्थ और स्टोन, मेटल,
ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग थिंग जबकि ईस्टर्न फिलॉसफी इसके कंपैरिजन में अभी भी प्राण को लेके तो सजग हो चुकी थी कि प्राण कुछ होता है, लेकिन इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं बनाया था अभी तक कि कोई खास वर्ग की चीज़ें ही जीवित होती हैं और कुछ चीज़ें निर्जीव होती हैं। तो ये जो जीव और निर्जीव शब्द हम लोग को प्रयोग करते हैं आज हिंदी के शब्दों में, ये आरंभ से नहीं है भारतीय ईस्टर्न फिलॉसफी की देन। ये खुद एक अपनी कंपैरिजन से निकला हुआ हिंदी रूपांतरण ट्रांसलेशन करते हुए शायद इंग्लिश शब्द का ट्रांसलेशन क्रिएट करना था तो कहीं से एक जीव शब्द आया, और नॉन लिविंग थिंग को बुलाना था तो फिर से एक शब्द आ गया निर्जीव। वरना आरंभिक तौर पे जो क्लासिफिकेशन है ये ईस्टर्न फिलॉसफी की देन थी ही नहीं, ये मूलतः वेस्टर्न फिलॉसफी की देन थी, जिन्होंने इसके क्लासिफिकेशन ब्लॉक्स क्रिएट कर रखे थे, ग्रुप्स बना रखे थे कि लिविंग थिंग किसको किसको पहचाना जाता है और नॉन लिविंग थिंग में किसको किसको पहचाना जाता है। तो ये एक बात हुई। फिर इसके बाद वेस्टर्न फिलॉसफी में एक और चीज़ अलग हुई जो कि मेनली ये थी कि ह्यूमन बीइंग्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के क्लासिफिकेशन के बाहर भी एक क्लासिफिकेशन है, उसमें आते हैं। वो गॉड्स स्पेशल क्रिएशन है, और वो ये कि गॉड ने ह्यूमन बीइंग्स को खुद अपनी ही इमेज में क्रिएट किया है। यानी खुद भगवान जिस रूप में जैसे दिखते हैं, इंसान एक अलग धरती पे बसाए गए ऐसे लिविंग थिंग हैं जो कि सिर्फ भगवान के प्रतिरूप हैं, भगवान के जैसे खुद दिखते हैं। तो जहाँ ईस्टर्न फिलॉसफी में भगवान ने अलग अलग रूप लिए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान एलिफेंट के रूप में भी आए हैं, हाथी के रूप में भी आए हैं, ऐरावत हाथी, भगवान सांप के रूप में भी आए हैं, शेषनाग, कोबरा भगवान शंकर के रूप के कोबरा नाग के रूप में, भगवान कछुए के रूप में भी आए हैं, मछली के रूप में भी आए हैं। तो ईश्वर सभी जीव जंतुओं के आकार में भी हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी यहाँ से डिफरेंट कर जाती है कि भगवान का रूप सिर्फ वैसा ही है जैसा कि इंसान होते हैं, और पशु पक्षी वगैरह के रूप में भगवान नहीं अवतरित होते हैं, भगवान वैसे दिखते ही नहीं हैं। तो ये एक वेस्टर्न फिलॉसफी का ईस्टर्न फिलॉसफी से मतभेद था। वेस्टर्न फिलॉसफी में इस मामले में जो बाइबल या अब्राहम से निकली फिलॉसफीज़ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, दोनों में ये बात समानता पाई जाती है। कहने का अर्थ है कि ये एक बिलीफ कॉमनली फाउंड है क्रिश्चियंस में भी और इस्लाम वर्ल्ड में भी। तो ये एक डिफरेंस यहाँ से आया था, और जबकि जो कि ईस्टर्न फिलॉसफी से अलग था। तो ईस्टर्न फिलॉसफी के अनुसार सब में प्राण हो सकता है, और बात यहीं पे रुकी हुई थी। नो फर्दर आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स और फर्दर एनालिसिस, डायग्नोसिस या फिर आगे का कुछ डायसर्निंग व्यूज़ नहीं उतरे थे ईस्टर्न फिलॉसफी में। वेराज वेस्टर्न फिलॉसफी में चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ी और बात हुई, व्याख्यान इस पे भी निकलना शुरू हुआ, थोड़ा सा डायसर्निंग व्यूज़ निकले कि इंसानों में क्या डिफरेंट है बाकी लिविंग थिंग्स से। तो लिविंग थिंग्स तो सभी हैं, लेकिन क्या अंतर है ह्यूमन बीइंग्स
versus animals, birds, fishes के बीच में. माइंडफुली ट्रीज में लाइफ को नहीं माना जाता था. तो ट्रीज जो थे वो नॉन लिविंग थिंग थे वेस्टर्न फिलॉसफी के अनुसार. इनफैक्ट इस एक दर्शन का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग दैट प्लांट्स हैव लाइफ हैज़ गॉन टू एन इंडियन named Mr. S.N. Bose for establishing the fact that plants and trees are living things. So, in fact, we may be right or wrong, whichever we will discuss in later part of this discussion. But the one good consequence coming from our beliefs was that one of us established to the world a knowledge that trees and plants are not non-living thing as what the Westerners have been assuming to be, and we managed to prove out our belief to everyone, to the whole world, that no, we may not be so much sophisticated, evolved, developed in our thinking, but for whatever we had, there was still something we had to offer to this world, some knowledge, and that we provided in the form of the discovery made by Mr. S.N. Bose, the Nobel Prize winner, Satyendranath Bose, that plants and trees have life. तो बात हो गई है जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी यूज टू सी ह्यूमन बीइंग्स एज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो इसके आगे यहाँ से ये एक इशू आया कि देन व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इसमें ये बात आई कि ह्यूमन बीइंग्स आर वन क्रिएचर्स ऑफ गॉड who are capable of looking into themselves and change their environment as per their needs. तो बाकी जितने भी हैं एनिमल, बर्ड्स, फिशेस, दे आर लिविंग लाइफ सब्जेक्ट टू द एनवायरनमेंट. जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है ये वैसे ही रहते हैं. बट इन कॉन्ट्रास्ट human beings are something which are living life as per with the capacity to change the environment itself as per their needs. How are the human beings capable of doing this? To answer to this thing, they started development of a new concept described by the term ability to identify or make differences and find similarities. काफ़ी और भी बातें उठी थी. कई लोगों ने प्रपोज किया कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में डिफरेंस ये किया है, ह्यूमन बींग्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग स्पीचेस, डूइंग ए कम्युनिकेशन, दे आर बाईपेडल. और ऐसा पाया गया है कि समवेयर ऑल ऑफ दिस डिफरेंसेस वट एवर हैव बीन टोल्ड may be present in some other animals also, something, but there was one unique ability which was not found anywhere in anything else, in any other creature, and it was this. It was given the name of conscience. Now this is something where there is perhaps no accurate exact translation of what is a conscience. It is in the modern vocabulary and dictionaries
encyclopedias described as an inner voice. तो अ, ये एक चीज़ थी जिसके बारे में ये बोला गया था कि ये सिर्फ ओनली ह्यूमन बींग्स हैव इट. और इसका अप्रॉक्सीमेट जो कॉन्साइंस का जो ट्रांसलेशन आया है वो है अंतर्ज्ञान. कि ह्यूमन बींग्स आर केपेबल ऑफ नोइंग देमसेल्फ. तो ये एक फर्दर यहाँ से एक न्यू डेवलपमेंट हुआ था अबाउट हाउ ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट. अब सवाल था कि ये जो कॉन्साइंस है ये कहाँ पर है. तो नाउ द वेस्टर्न फिलॉसफी begin to make distinction between life and conscience. Meaning to say that there was life in all the creatures including human beings, but there was something that exclusively only the human beings had, but other living things did not have, and that was the presence of a conscience. In contrast, the Hindu philosophy, the Eastern philosophy continued to believe that everything has got a pran, and अंतर्ज्ञान वगैरह के बारे में no further views were presented about who has it, who doesn't have it, and what does it mean. And there was no further biological precipitation of the idea as contrasted with the how the Western philosophy was going and progressing. Now, when the conscience has been called, the question was where is conscience and where is life in a human being. तो जो human beings थे इसमें लाइफ को एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग में कहाँ होती है इसको लेके काफ़ी कुछ गेसेस चलते रहे हैं philosophical search में in West, and sometimes it was announced that it is the brain which has got life, sometimes it was announced that it is the heart which has got life, and sometimes the navel area. uh, Different philosophers kept coming, and different sources, the headquarters of life within human body and the headquarters of conscience within human body was put into discussion. In fact, you will notice that here there is something common between the two philosophies. What were guessed to be the headquarters of life form, life energy, are what we are in the Eastern philosophy knowing by the terms chakra and kundalini. So these are something comparably similar to the headquarters of life within human body. Now, in regard to conscience, there happened to be another little bit development, something separate from what was there in the Eastern, what was happening in the Eastern philosophy. There was no discussion about what is conscience in the Western philosophy. Some of the philosophers
started believing that within human body's brain there is a special gland called the pineal gland, which is the headquarters of human beings' ability to hold conscience. And in the olden times, this particular organ, hypothetical organ, was supposed to be the spot from where human bodies exercise this particular function of running a conscience, functioning a conscience, and then making a distinction between the right and the wrong. Now, pineal gland, it was supposed to be present in the brain somewhere near hypothalamus portion of the human beings, and it was this particular gland which gave human beings another very special ability uh, to be able to look at themselves from outside. So the Western philosophers uh, had believed that human beings had, because of the presence of pineal gland organ, the conscience, another special ability, which was that while being in a body, they could, by their use of pineal glands or something, put themselves in an imaginative way outside of their own body and look at themselves from outside as to how they behave, what they look like, what are their behavior like, what they are doing, whatever they are doing is right or wrong. So even when they were physically very much in the environment, it was uh, it had human beings had the ability to put themselves, their soul or their thinking, something outside of their body and the environment, and look at themselves as if God is looking at that particular human being. So it was the presence of conscience acting through the pineal gland, functions of the pineal gland, that human being was able, had the capacity to elevate himself to the position of God. So it became quite a subject of biological research as to where exactly inside human brain is the pineal gland. Of course, in later era, it was found to be in a hypothetical place, and till now, no exact organ has been found within human body, either brain, heart, or anywhere else, to show what is the pineal gland. Now, well, this particular belief led to another very famous scientific experiment, that human beings are capable of putting themselves outside of their own body and their environment, that uh, creatures of God who have this particular ability will also, all other creatures will also, may also be having the conscience abilities within themselves. And to experiment that out, which creatures have this ability or not, a scientific experiment was designed, which is what in biology and in psychology we know by the name of mirror function, mirror test, mirror reflection test. It is a very, very popular scientific experiment which is conducted over creatures in order to know whether the creature is something different and having some special abilities uh, to respond to the love and understand emotions and act according to the emotions. In this test, it's a very simple test conducted very simplistically, that a mirror is kept,
and the creature is left, for example a monkey, elephant, fishes, something, in front of the mirror, and their behavior is observed कि वो कैसे behave कर रहा है. It is believed as per the experiments theory that creatures, for example a monkey, which are able to identify themselves, the reflection in the mirror, and spend some time grooming themselves or something as per the observations, then it is believed that probably the creature is able to identify his image, and therefore it may also be having an ability, it is able to do so because it has ability to hold conscience and look at its own self from outside, like God does to human being, God does to this creature. So this particular function test is something which is a result of the Western philosophy, and in modern days also this experiment is an ongoing experiment where lots of scientific progress in the field of within the field of psychology is still happening. It hasn't come to conclusion as yet and then standstill. In fact, in more recent times, around 2015 and 16, certain thinkers from Italy and Roman Catholic Church have proposed that this particular kind of test is more dependent on the visual abilities of the creature. So they will have to design this particular redesign this test to suit the body functions of other different creatures. For example, a dog has got a special nasal powers, ability to smell out things. So therefore, instead of depending on the mirror and the visual ability to respond to its own behavior, self identify its own image in the mirror, they will have to redesign things, so that experiment, so that the dog can be subjected to see different environment test where it may be checked whether he is able to identify its own smell from other creatures, other dogs. So the work is still happening in the search of the conscience, the headquarters of the conscience within different life creatures. So that is the difference over here. What we come to understand from the two things is that the Eastern philosophy it had only the idea of prana and didn't progress much, although it did develop words like antargyan, and of course the Buddha came and he provided the idea of both. The Western philosophy made a difference, significant difference, and it created difference between living and living things, non-living things. Within living things, there were further two categories: one holding conscience and not holding conscience. So they were non-living things, and of course when they were living, then there was also a distinction between whether it is having the running function of brain described by the term consciousness, and those which were non-conscious. In fact, the term consciousness is now here we can see something which is comparable with the term both, and conscience is somewhere close to antargyan. And another word
which biologically defines consciousness in Hindi is murcha. So, for example, in Ramayana, Lakshman becomes murchit after being hit by the arrow of Ravan. So, uh, that particular thing is what we call also by the alternate term fainting or becoming unconscious. So, consciousness is basically, as per the Western philosophy, uh, whether a person is in state, a creature is in the state of responding to the stimuli and perform its routine functions or not. When it is, yes, it is having capacities, it is called to be conscious, and when it is alive but not able to respond to its routine functions, then it's supposed to be unconscious. And in Hindi we call it मूर्छित हैं, सजीव हैं, तो होश में हैं या बेहोश हैं. And when it is having functions to capable of having power to identify the right from the wrong, then it is said to be holding conscience. And when the conscience is developed enough, it is alternately also used by the term, again the same term, the conscience. The consciousness word is used twice with two meanings. It also represents the conscience function, whereas it also represents the fainting and unfainting function. Now, the introduction of this particular thing, conscience, opened a new branch of thinking and field of study, which we today know in the Western world as psychology. And it was assumed that further proposed by the theorists within the field, from the fields of psychology, that not all human beings have conscience developed same as other human being. So sometimes the conscience is very strongly developed, they are good human beings, and sometimes the conscience is weakly developed or not developed at all, and those people are supposed to be mentally dysfunctional, psychologically dysfunctional, and they are described as psychologically ill or psychopaths. So you can see all this development has happened within the Western philosophy, which is in general absent, although in course of time we have developed the Hindi vocabulary equivalent of these functions. For example, psychology we read today as manovigyan, but merely because the Hindi word is available doesn't mean the idea originally is of Indian origin. The idea is emerging from the Western philosophy, and this is how it has progressed.